ऑल राइट, वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। एवरीडे मैथ जो मुझे बहुत पहले स्टार्ट करवा देना चाहिए था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक हमने किए उनमें से। बिकॉज इस टॉपिक के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एवरीडे मैथ के आते हैं। द ओनली टॉपिक विच हैज एटलीस्ट 3 to 5 questions in paper 1 and at least 2 questions in paper 2। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना आता है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसके लेट्स डू सम वेरी बेसिक एवरीडे मैथ क्वेश्चंस फर्स्ट। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। पहले मुझे समझाने देना, जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। Suppose there is a piece of wire, there is a piece of wire and the length of this piece of wire, for example, is 120 centimeters. The total length of this piece of wire is 120 centimeters. Suppose मैं इस वायर को जो है ना वो दो रेशियोज में ब्रेक कर देता हूं। पहला रेशियो यहां से लेके यहां तक, लेट्स कॉल इट 4 and the other ratio is 6। मतलब टोटल लेंथ तो 120 है, but I have broken the wire into two ratios. The first ratio is 4 and the second ratio is 6. Ayan, what is the total length? 120. And what is the total ratio? The total ratio is 10 and the total length is 120। अब क्वेश्चन कैसा आता है? पार्ट 1, फाइंड the length of smaller piece। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस। तो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगा। आई नो देयर आर अदर मेथड्स एज वेल, बट क्योंकि मैं पूरी एवरीडे मैथ ही आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करवाऊंगा तो ये भी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कराऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक टू हेडिंग्स, लेंथ एंड रेशियो। ऑलराइट, चौधरी शायान, व्हाट इज द टोटल लेंथ? 120। 120 जो टोटल लेंथ है, अक्रॉस 120 आई शुड पुट what ratio? Total ratio. In front of total length I should put total ratio. Zona, if I want to find the length of the smaller piece, what is the ratio of the smaller piece? 4. The ratio of the smaller piece is 4 and I want to find out its length, so I'm going to put x and then cross multiply. 120 multiply by 4 is equals to 10 multiply by x। फिर 10 वहां जाके क्या हो जाएगा? Divide 120 multiply by 4 divided by 10 is equals to x। 0 से 0 cancel। What is 12 multiply by 4? 48 centimeters। Why is any confusion in this? बिल्कुल क्लियर है? ओके, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 थी। लेट्स do part 2 of this example. I hope nobody is writing. Part 2, find the percentage of the larger piece। Find the percentage of the larger piece। Saad, what is the total percentage? 100 total percentage होती है। Now, I'm going to make two headings, ratio and percentage. For this particular example, Radva, what is the total ratio? The total ratio is 10. So in front of 10 मुझे कितनी percentage लिखनी चाहिए? 100, बिकॉज टोटल रेशियो के सामने टोटल परसेंटेज। सना, अगर मैं लार्जर पीस की परसेंटेज निकाल रहा हूं तो मुझे लार्जर पीस का क्या ऑलरेडी पता है? 6। उसका क्या पता है मुझे? रेशियो। तो मैं रेशियो में 6 पुट करूंगा और परसेंटेज में
नहीं, पहले तो x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और वो आएगा, फिर वही आएगा, 60 आएगा। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स 6। 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 10 ऑन द अदर साइड, आप चाहें तो यू कैन कैंसिल जीरो विद जीरो ओवर हियर ओनली। इससे इसके बजाय कि आप पहले नीचे लेके जाएं 10 को, फिर ऊपर नीचे जीरो से जीरो कैंसिल करें, आप यहीं से कैंसिल करें। एक्स कितना आ जाएगा? 60। सो द परसेंटेज इज 60। कैन यू कम ओवर हियर? एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज दोबारा से मेरे पास आई हैव अ पीस ऑफ वायर and the length now of this piece of wire, say for example, is not given to me. मुझे इस पीस ऑफ वायर की लेंथ नहीं दी गई। मैंने इस पीस ऑफ वायर को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, पहला यहां से लेके यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक। पहला रेशियो 7 है और दूसरा रेशियो 3 है। इसका मतलब समरा स्मॉलर लेंथ का रेशियो कितना है और लार्जर लेंथ का? ओके, सपोज मुझे टोटल वायर की लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन आई हैव द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पीस ऑफ वायर, से इट इज 60 centimeters. Find part 1, the total length of the wire. Okay, I'm going to make two headings, one ratio and the other obviously length. Mikhail, what ratio and what length do I already know? टोटल रेशियो मालूम है और टोटल लेंथ मालूम है? नहीं। तो पहले तो मैं मिकाइल वो वैल्यूज लिखता हूं ना जो मुझे पता हूं। अगर मैं यहाँ 10 लिख देता हूं तो क्या ये मुझे पता है? नहीं। हाँ, तो मैं वो लिखना चाह रहा हूँ जो मुझे पता हो दोनों। वो दोनों क्या हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है? स्मॉलर रेशियो एंड द स्मॉलर लेंथ। तो 3 के सामने मैं क्या लिखूंगा? In front of 3 I'm going to write 60. And if I'm finding the total length, what ratio should I put over here? 10, क्योंकि टोटल रेशियो कितना है? 10। तो अगर मैं यहाँ टोटल रेशियो लिख के यहाँ x लिखता हूं तो शार्विन मुझे कौन सी लेंथ मिलेगी? टोटल लेंथ मिल जाएगी। 3x is equals to 60 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैं क्या यही 3 और 60 कैंसिल कर सकता हूं? 3 1 जा, so what is 20 times 10? 200. Part 2. Find the percentage of larger piece. I'm going to make two headings, one ratio and the other percentage. Okay, what is your name? Urva, do you know what is the total percentage of anything? 100. What is the total ratio in this question? So in front of 10, I am going to put 100%. If I am finding the percentage of the larger piece, what ratio should I put over here? 7. If I put 7 over here and I put x over here, तो मुझे कौन सी परसेंटेज मिलेगी? मुझे कौन सी परसेंटेज मिलेगी? द लार्जर पीस। ओके, 10 times x is equals to 7 times 100। अभी कैंसिल कर सकता हूँ या पहले डिवाइड करूं? डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। 1 0 विथ 1 0, व्हाट परसेंटेज? 70। ऑल दो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर फजूल की लंबी कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली नजर आ रहा है, वो 30% है, वो 70% है, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, दिस इज द प्रोसीजर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। Okay, I'll give you 1 minute for each example. Start copying. 1 minute for example 1, 1 minute for example 2.
Okay, you have to write fast. Have you copied the first example? Okay, come to the second example. एग्जाम्पल 3 से मेरे साथ साथ फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है? Okay, can we start example 3 now? Zona, are you done? Okay, example 3. Now, suppose there are 3 people, person A, person B and person C. अब इन 3 लोगों ने मिलके एक दे स्टार्टेड अ बिजनेस, और बिजनेस के लिए क्या चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो तीनों ने दे इन्वेस्टेड सम मनी, ठीक है? अब दे इन्वेस्टेड द मनी इन द रेशियो 2:3:5। जिसका रेशियो सबसे कम है उस इंसान ने पैसे भी सबसे कम इन्वेस्ट किए, और जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है ही इन्वेस्टेड मोर मनी कंपैरेटिवली। तो सबसे ज्यादा पैसे किसने इन्वेस्ट किए? सी ने। सपोज द टोटल इन्वेस्टमेंट for example was $60,000. The total investment was $60,000. The question is asking, find part 1 the amount invested. You will do this side by side with me. The amount invested by person C. The amount invested by person C. Rida, मुझे 2 headings क्या बनानी चाहिए? If I want to do this with cross multiplication, what 2 headings should I make? Ratio and investment. Percentage का question है ही नहीं. There is no percentage in this question. Yes. So I know the only amount I know is the total amount. The only amount that I know is the total amount. So Leena, अगर मैं amount में 60,000 लिख देता हूं जो कि total amount है, what ratio do you think I should put over here? 10.
बिकॉज द टोटल रेशियो इज 10। तो टोटल रेशियो के सामने टोटल अमाउंट आनी चाहिए. सो द टोटल अमाउंट given to me in the question is 60,000 and the total ratio is 10. Shayan Khan, which amount am I finding? सी, तो अमाउंट में तो मैं x लिखूंगा. शयान, मैं रेशियो में क्या लिखूं? 5, बिकॉज सी का रेशियो कितना है? 5. सो रेशियो में 5, अमाउंट में x. प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. व्हाट डिड यू से? ओके. जीरो से जीरो कैंसिल. अब यू कैन डू दिस विदाउट अ कैलकुलेटर एज वेल. व्हाट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5? 30. 6 5 30 और उतने ही जीरोस लगा दीजिए जितने जीरोस यहां पर हैं. यानी कि 30 के बाद कितने जीरोस? 1 2 3, 3 जीरोस. नहीं, एक जीरो तो कैंसिल हो गया था ना. 30,000. पार्ट 2. The percentage of B. The percentage of B. Taha, what two headings should I make? Length. Percentage and ratio, yes. तुम्हारी वजह से मैं हंसूं जी. रेशियो एंड परसेंटेज. ताहा, कौन सा रेशियो और कौन सी परसेंटेज मुझे ऑलरेडी पता है. व्हाट इज द टोटल रेशियो? तो उसके सामने कितना परसेंट? यस. टोटल रेशियो के सामने टोटल परसेंटेज माइस व्हाट परसेंटेज एम आई फाइंडिंग? एंड बी का रेशियो कितना है? 3. तो 3 के सामने मैं क्या लिखूंगा? x. Please solve this and tell me the answer. What is your answer, Saad? Because it is a very complicated solution. If I cancel 0 with 0, how can you get 33.33? We are not dividing by 3, बेटा. हम कहां से 3 से डिवाइड कर रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग. 3 multiplied by 10 is 30. So 30%. Let's come to the questions. Question number 1. Come to practice questions. Question number 1. Solve the question yourself. I'll paste the question on the screen and you are going to solve it on your own. Read the question, make 2 headings and do the cross multiplication. Page number बता दूं, 63. बताइए माइस, what ratio and what length is already given to me in the question? तो ये जो लेंथ 150 दी हुई है माइस, इसके सामने मैं रेशियो कितना लिखूंगा? 10. क्योंकि ये लेंथ कितनी है? दिस इज द टोटल लेंथ. तो इसके सामने टोटल रेशियो. एंड व्हाट लेंथ एम आई फाइंडिंग? लार्जर. तो लार्जर का रेशियो कितना है? 7. 33.3. 7 times 15, 105 meters. Although unit के marks नहीं होते पेपर में. There are no marks for units. After question number 1,
We will do question number 3. ये टोटल लेंथ पता है ना? What three ratios is the question divided into? Resting, trained and playing. तो 5 किसका रेशियो है? Resting. 9 training and 6 playing. Please make two headings. What two headings? Ratio and length. मैं एरिया क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मीटर्स जो है ना, मीटर्स इज द यूनिट ऑफ लेंथ. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is length basically. So what is the total ratio if I add all the three ratios? No. If you add all the three ratios, 20, 20, 20. क्यों 20? 5 plus 9, 14, 14 plus 6, 20. In front of 20, against 20, what should I write? 12,000. So what length am I finding in this question? प्ले एरिया. प्ले एरिया का रेशियो कितना है? 6. अब यहीं से कैंसिल करना. डू द कैंसिलेशन राइट नाउ ओनली. So I'll cancel 0 with 0. What else? 2 1s are 2. 2 3s are 6. What is 3 multiplied by 12? 36 के आगे 2 zeros लगा देना. 36 के आगे 2 zeros लगा देना. 3 12s are 36. 36 and then 2 zeros. 3,600. After question 3, we will do question number 4. Read the question and then tell me, Abdullah, what two headings should I make? Ratio and percentage. तीनों की निकालेंगे. शेरोज टोटल रेशियो कितना बन रहा है तीनों को प्लस करके? 20. In front of total ratio, what percentage should I put? 100. मैं किसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं? तीनों की निकाल रहा हूं. तो सबसे पहले किसकी निकालूं? आर्नल्ड की निकाल लें, जिसका रेशियो कितना है? सो 5 के सामने x. फाइंड द परसेंटेज ऑफ आर्नल्ड फर्स्ट. So you cancel 1 0 with 1 0, and then what do you cancel out? 2 with 2 1s are 2 5s. So what is the value of x that you will get? 25%. Now this 25% is the percentage of Arnold. अब हम किसकी परसेंटेज निकालेंगे? जोसेफ की. Using the same cross multiplication again. Using the same cross multiplication again. Ratio, percentage. Total ratio के सामने total percentage. What is the total ratio? 20. उसके सामने
100%. Now, because I'm finding the percentage of Joseph now, what ratio should I put? 7 over here and then x. Yes, yes. You will cancel 0 with 0 and then you can cancel out 2 with 10. तो शेरोज ये कितनी आएगी परसेंटेज? 35%. Now, if you are a smart student, you will not do the cross multiplication again. And now only the third person is left. तो आप करेंगे क्या? You will add these two percentages and you will subtract it with 100. Yes. तो आपको Sherlock की भी मिल जाएगी. What will be the third if you add them? What is 35 plus 25? 60. 100 minus 60. 40% is your third percentage. Question number 6. The most misunderstood question. Question number 6. I will give you a minute. Make your cross multiplication. And then I'll do it on the screen. But before that, I want you people to do it on your own. Yes, calculator use कर लीजिए अगर करना. Okay. What is the total ratio? 15. 15 के सामने आपने क्या लिखा है? Have you written 8,000 in front of 15? Because that is wrong. If you have written 8,000 in front of 15, that is wrong. Because this amount 8,000 is representing Patrick. तो इसके सामने तो पैट्रिक का रेशियो आना चाहिए. वो कितना है? 5. पैट्रिक का रेशियो 5 है. तो आई एम गोइंग टू पुट 5 in place of ratio and what in place of amount? 8,000. भाई अगर ये पैट्रिक का अमाउंट है तो इसके सामने रेशियो भी किसका आना चाहिए? पैट्रिक का आना चाहिए. पैट्रिक के अमाउंट के सामने पैट्रिक का रेशियो आना चाहिए. मैं शार्मिन किसका अमाउंट निकाल रहा हूं? जॉन का रेशियो कितना है? So in place of ratio, I am going to write 7 and in place of amount, x. So 5x is equals to 8,000 into 7. Calculator क्यों use कर रहे हैं? You can cancel, do the simplification yourself. 5 ones are 5. 5 ones are 5. कितना कैरी हो जाएगा? 3. तो ये 30 बन जाएगा. 5 6 are 30 and then 2 zeros as it is. 1600 times 7. What is the answer? 11,200. आंसर सेम आ रहा है. फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की. ओके, कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 मैं यहीं पे कर रहा हूं. Did you read the question? It's mentioned, Saud. Elsa received a portion of her profit of 5,000.
Find the amount received by Luis if the ratio between this is this. What is 5,000? एल्सा का अमाउंट, एल्सा का प्रॉफिट कितना है? 5,000. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्सा? 1 2 3 4. एल्सा का पहला वाला है 7, उसके सामने 5,000. एंड व्हाट अमाउंट आर वी फाइंडिंग? उसका रेशियो कितना है? लुइस का रेशियो कितना है? ये रिस्पेक्टिवली होता है, इसका पहला, इसका दूसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका चौथा. तो लुइस का 11 है. 11 के सामने x. नो, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा. 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. यूज योर कैलकुलेटर प्लीज. 7,857. पॉइंट के बाद क्या है? ओके, सो यू कैन राइट 7,857. यू कैन राइट 7,857. All right. Before I give you your classwork questions, please mark your homework. Page 67. Page 67. Question 1 till question 8. Question 1 till question 8. We have a class tomorrow. तो कल की क्लास से पहले भेज दीजिएगा. बिफोर टुमारोज क्लास. कोशिश करना कि आज ही भेज दो. नाउ योर क्लास वर्क इज question 1 to question 9. जो remaining questions हैं, the questions which we have not done, which includes question number 2, 4. असेसमेंट्स चल रहे हैं क्या? कब? अच्छा ठीक है, फिर मुझे सैटरडे को दे देना. 2 4. व्हाट एल्स हैव वी नॉट डन? 5 4 किया है हमने. हाँ 4 किया. 7. ओके, ओनली दीज 4 क्वेश्चंस. 2 5 7 and 8. This is your classwork. Online students will WhatsApp me the solutions of this classwork before 5, before 6:15. That's it for today.